Hello everyone, myself Tejal and today we are going to discuss about central nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord. So we all know that brain and spinal cord are very vital structures in our body. तो ये इतने important है, vital मतलब ये बहुत important है. तो ये इतने important है तो इन्हें protection देना तो बनता है. तो इन्हें protection कौन देता है? They are no one but the meninges. This meninges provide protection to these vital organs in our body. So, what are the meninges? They are the connective tissue membranes that cover the brain and the spinal cord. Meninges में भी तीन प्रकार रहते हैं. वो है ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर. What is ड्यूरा मैटर? ड्यूरा मैटर is the outermost covering which is thick, मतलब जाड रहता है वो, और बाहर से सबसे बाहर की लेयर है. ड्यूरा मैटर में भी क्रेनियल ड्यूरा मैटर और स्पाइनल ड्यूरा मैटर है. So what is cranial ड्यूरा मैटर? It consists of endosteal layer and meningeal layer. Endosteal layer and the meningeal layer. Okay, what is endosteal layer? It forms the periosteum for the inner surface of the skull bone. What you have to remember about endosteal layer is it covers the inner surface of skull bone. And what does meningeal layer do? It covers the brain. Okay, it covers the brain. Endosteal layer covers the inner surface of skull bone. Meningeal layer covers the brain. Now, they told us that two large rigid folds of the inner layer of dura project into the cranial cavity and help to support the brain and to maintain it in position. Now, let's understand this. Imagine this is a bowl and we have kept an egg in this bowl. मतलब एक कटोरी है और उसमें हमने एग रखा है. ओके, अंडा रखा है. अभी ये बाउल तो बहुत बड़ा है, कटोरे की साइज तो बहुत बड़ी हो गई और अंडा इतना छोटा है, तो ये अंडा इधर उधर मूवमेंट करेगा और ये फूट जाएगा. अंडा फूट गया तो इट वुड बी ऑफ नो यूज. ओके, सो हम क्या करेंगे? सपोज हमने एक कॉटन लिया या फिर कपड़ा लिया और कपड़ा या फिर कॉटन को फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये स्पेस में प्लेस कर दिया. तो अब अगर हमने कपड़ा या फिर कॉटन ये स्पेस में रख दिया तो ये फोल्ड की वजह से ये पूरा बाउल का जो स्पेस यहाँ पे था उसमें पूरा कपड़ा आ जाएगा और अंडे को बहुत कम जगह मिलेगी मूवमेंट करने के लिए. तो ये अंडा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, बाउल में फिक्स हो जाएगा, ये हिल नहीं पाएगा क्योंकि उसको जगह ही नहीं बचेगी. इधर के साइड तो पूरा अपन अब हमने कपड़ा डाल दिया है. ठीक है, सो सेम गोज विद द ब्रेन ऑल्सो. सपोज दिस इज योर क्रीनियल कैविटी और यहाँ पे आपने अपना ब्रेन है. ठीक है, तो ये ड्यूरा मैटर क्या करता है? ये ड्यूरा के जो फोल्ड्स है तो ये फोल्ड्स करके इसमें चले जाता है कैविटी में. तो उसकी वजह से क्या होता है? ब्रेन ये जगह पे फिक्स हो जाता है, उसको मूवमेंट के लिए जगह नहीं मिलती. तो ब्रेन क्या होता है? उसकी पोजीशन में रहता है और ब्रेन को एक सपोर्ट भी रहता है ये ड्यूरा मैटर के कवरिंग की वजह से. So what are the names of that covering or the fold? That is false cerebri and tentorium cerebelli. So what is false cerebri? Suppose this is your brain. ऐसा पास्ता जैसा दिखता है ना, that are called as gyri. Okay, so this is your brain जो हम पास्ता जैसा दिखता है. तो ये क्या है? ये है cerebrum. और जब हम इसको कट करते हैं, मतलब इसको दो सेशंस में डिवाइड करते हैं, राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर. और इसके नीचे रहता है सेरेबेलम. ओके, सेरेब्रम इज अदर वन, सेरेबेलम इज डिफरेंट वन. और यहाँ पे रहता है सपोज ब्रेन स्टेम. तो अगर ये दोनों के बीच में जो रहता है वो रहता है फैल्क्स सेरेब्री, और इसके नीचे मतलब सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच में जो रहता है उसको हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरेबेली. ओके, जो ब्रेन के सबसे करीब था वो था पाया मैटर. ओके, सो इन्होंने अपने को क्या बोला है कि पाया मैटर इनर मोस्ट कवरिंग है. सो इट इज वैस्कुलर कवरिंग क्लोजली अप्लाइड टू द ब्रेन. वैस्कुलर मतलब इट इज रिच इन ब्लड सप्लाई. इट इज अ वैस्कुलर कवरिंग मतलब इट इज रिच इन ब्लड सप्लाई. और क्लोजली अप्लाइड टू द ब्रेन मतलब ब्रेन के सबसे करीब है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सबसे करीब वाली लेयर. ओके, द पाया मैटर अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म्स ligamentum denticulatum and continues as phylum terminate below the end of the spinal cord. For example, this is your spinal cord. ठीक है, इतना अपना स्पाइनल कॉर्ड है. तो ये पाया मैटर जो रहता है ये लिगामेंटम डेंटिकुलेटम बोल के या इसको कवर करता है स्पाइनल कॉर्ड को. ठीक है, और उसके नीचे भी कवर करता है, पर स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जब वो कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइलम टर्मिनेट. और स्पाइनल कॉर्ड तक जब कवर करता है उसको हम बोलते हैं लिगामेंटम डेंटिकुलेटम. यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म्स बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ
So these are your meninges. This is the dura mater, which is the outermost layer. Okay, you can see dura mater. This is arachnoid matter, middle layer, and this is pia mater, that is innermost layer. अब ड्यूरा मैटर और arachnoid मैटर के बीच में का जो लेयर रहता है उसको हम सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं. हम उसको क्या बोलते हैं? सबड्यूरल स्पेस. जो एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में का रहता है हम उसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस. ओके, सब एरेक्नॉइड स्पेस. सब एरेक्नॉइड स्पेस में रहता है सीएसएफ, दैट इज योर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ओके, ये सीएसएफ कहाँ रहता है? सब एरेक्नॉइड स्पेस में, जो एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में है. तो इपिड्यूरल स्पेस का है, दिस इज आउटर स्पेस विच इज इपिड्यूरल स्पेस. एज वी डिस्कस कि दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड और उसको जो लेयर कवर करता है उसको हम बोलते हैं लिगामेंटम डेंटिकुलेटम. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड लास्ट वाला जो था वो फाइलम टर्मिनेली था. ओके, सो लिगामेंटम डेंटिकुलेटम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करता है. सो लेट्स टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेवल ऑफ फोरामेन मैग्नम टू द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 vertebrae. It is approximately 45 centimeter. This is the foramen magnum. Okay, this is the foramen magnum. ये फोरामेन मैग्नम, जैसे मैंने आपको बोला, जहां स्कल आपके स्पाइन को, बैक को या फिर वर्टिब्रे को कनेक्ट होता है उसको, वो स्पेस को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम. ठीक है, लाइक दिस वन. ओके, और L1 वर्टिब्रे क्या है, मैंने जैसे बोला आपको, सपोज दिस इज योर बैक, ये जो रहते हैं ये सर्वाइकल रहते हैं. सपोज यहाँ पे आपकी नेक है, ठीक है, ये सर्वाइकल हो गए. उसके बाद में ये थोरैसिक है. सर्वाइकल कितना रहता है? 8. थोरैसिक कितना रहता है? 12. उसके बाद में है लंबार. लंबार कितना रहता है? 5. Then there is sacral, which is 5, and there is coccyx, which is 1, which is the tailbone. Okay, so they have told us spinal cord extends from the level of foramen magnum, मतलब foramen magnum से लेके वो L1 vertebrae तक आता है. L1 vertebrae मतलब यहाँ तक आता है. Okay, it is 45 centimeter in length. Now spinal cord. Spinal cord external features. The spinal cord shows cervical and lumbar enlargement where the nerve supplying limbs leave spinal cord. Where the nerve supplying limb leaves spinal cord. मतलब यहाँ पे क्या है? Cervical और lumbar enlargement है. Look here. They have shown here. This is the cervical and this is the lumbar enlargement. Okay, so they have told 31 pairs of spinal nerves are attached to the spinal cord that exit through the intervertebral foramina. जैसे मैंने आपको बोला, there are cervical 8, thoracic 12, lumbar 5, sacral 5 and coccyx 1. This in total forms 31 pairs of spinal nerves. Okay, उन्होंने बोला है कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड L1 वर्टिब्रे पे एंड होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड, द सैक्रल एंड स्पाइनल नर्व्स गोज डाउनवर्ड्स एज क्वाडा इक्विना, दैट इज द हॉर्स टेल अपीयरेंस. मैंने जैसे आपको बोला कि स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे एंड हो चुका है, दैट इज L1. यू कैन सी हियर, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड हो चुका है, बट नर्व्स तो नहीं एंड होते, तो नर्व्स नीचे वापस डाउनवर्ड ही हो जाते हैं, जैसे वो हॉर्स टेल अपीयरेंस बनाते हैं. ओके, हॉर्स टेल अपीयरेंस पता है ना, सो वो बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉडा इक्विना. ओके, before emerging from the appropriate vertebral foramina, conus medullaris is the tapering end of the spinal cord and is continuous below with a thin fibrous cord, that is phylum terminal. You can see here, this is phylum terminal, and cons medullaris is this where the spinal cord is ending. End का जो portion है ये वाला, उसको हम cons medullaris बोलते हैं. So these terms you have to remember and keep it in your mind. They're like chorda equina, cons medullaris, phylum terminal. So spinal cord internal structures. Transverse section of the spinal cord shows that it consists of gray matter and white matter. So this transverse section मतलब जैसे हम ऐसा देख रहे थे, transverse मतलब deep in detail, और transversely हम कैसे देखेंगे, तो this is the diagram of transverse section. So where is the gray matter? Gray matter मतलब जो center में है उसको हम gray matter बोलते हैं. This is like it is looking like a H. Somewhat it is looking like a H. और व्हाइट मैटर मतलब जो पेरीफेरी में है, मतलब एजेस में है, उसको हम व्हाइट मैटर बोलते हैं. और ग्रे मैटर इज द मिडिल पोर्शन विच इज द center. Okay, so they told us that the gray matter is placed centrally and the white matter is placed peripherally. Gray matter is composed of nerve cell. ये जो gray matter है यहाँ पे nerve cells है, न्यूरोलजिया है and blood vessels भी है. कहाँ पे है? ग्रे मैटर में. whereas the white matter is composed of myelinated and non-myelinated nerve fibers. जैसे हमने previous session में neurons पढ़ा था. myelin sheet is the one which covers the axon. Okay, the covering of the neuron is called as myelin sheet. और जिसमें myelin sheet नहीं रहेंगे उनको हम non-myelinated बोलेंगे.
Gray matter is arranged like H letter, okay, around the central canal. Where is the central canal? This is the central canal, which is in the center, okay. White matter, gray matter is looks like H. As I've told you, this looks like H, like the brown one. And the central canal and has dorsal, ventral and lateral horns. डोर्सल हॉर्न है, वेंट्रल हॉर्न है और लैटरल हॉर्न है, ठीक है. White matter is outside the gray matter and is divided into anterolateral and posterior funiculi. Anterolateral and posterior funiculi. Central canal is lined by ependymal cells. The central canal, which is in the center, is lined by ependymal cells. So these are the cranial nerves and spinal nerves. Spinal nerves, as I have told you, ये back को रहते हैं. Cervical 8, thoracic 12, lumbar 5, sacral 5, and coccyx, which is the tailbone, that is 1. This in total forms it like 31 pairs of spinal nerves. Okay. Cranial nerves, which pass from the brain. उनको क्या है? Olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducent, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory, and hypoglossal. Accessory is also called as spinal accessory. Okay, they are total 12 in number. So I have also given you one mnemonic, that is only one of the two athletes felt very good, victorious, and healthy. So like this, you can remember this cranial nerves. Facial nerve and vagus nerve are important. Like you can remember it and मतलब सभी learn करना है, but facial and vagus are more important. Okay. And you can remember this mnemonic also. Only one of the two athletes felt very good, victorious, and healthy. If you have your own mnemonic, you can remember it. But remembering this cranial nerves is very important. Okay. So that was all about this session. Remember, I have always got your back. Thank you. Do like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you.